Nearly 100 years ago, a bunch of radicalized, extreme-right Bavarians launched an audacious attempt to capture power locally, with a dream of subsequently extending it across Germany. The November 1923 plot, which has gone down in history as the Munich beer hall Putsch, was partly inspired by Benito Mussolini's successful march on Rome a year earlier. Newly fascist Italy offered a role model, but the Bavarian authorities foiled the coup attempt. Among the 9 men arrested was their ringleader, a World War I corporal by the name of Adolf Hitler. He was sentenced to 5 years in prison, the most lenient sentence possible given the charges against him, and served merely 8 months, during which he began dictating Mein Kampf to his secretary, Rudolf Hess. His other key associates at the time included Hermann Göring and Heinrich Himmler. Fewer than 10 years later, they were all in power, in Germany, not just Bavaria. Hitler remained chancellor for arguably the most tumultuous dozen years in modern European history. That history should serve as a reminder why it might be a mistake to dismiss lightly the far-right plot foiled in Thuringia last week. 90 years after Nazism, what's Europe's future? On the face of it, it comes across as a classic example of history repeating itself as farce. It appears to have drawn its strength from a segment of the Reichsbürger community, whose disparate adherents share the belief that post-World War II Germany is essentially a corporation established by the Western Allies, rather than a sovereign state. If there's any truth beneath that ostensibly absurd proposition, it certainly does not apply to Germany alone. The US would be a more striking example. Besides, the Mussolini regime is frequently cited as the earliest archetype of corporate statism in Europe. Perhaps a far more viable contender for opprobrium today, from both the far right and what remains of the left, albeit not necessarily on the same grounds, is economic neoliberalism, which superseded varying degrees of social democracy across much of the West in the Reagan-Thatcher and Clinton-Blair eras. That poses a problem on the extreme right for those who still view Margaret Thatcher and Ronald Reagan as ideological icons. But then, the myopia extends to a refusal to recognize that the scattershot and scatterbrained Trumpian philosophy is part of the problem, rather than any kind of solution. But with other alternatives to the woes of rampant corporate capitalism derided as utopian fantasies, too many of those at the receiving end tend to place their faith in authoritarian alternatives that promise much but are likely to deliver little. It comes as no surprise that Germany is the largest consumer of QAnon conspiracy theories outside the Anglophone world, and that Donald Trump, whose German ancestors were known as the Drumps, is viewed as something of an ideal. Alongside, not surprisingly, is Vladimir Putin, although there is no evidence that the Russian state responded to appeals for assistance from the associates of Heinrich XIII. The self-styled 71-year-old scion, dubbed Putsch Prince by the German media, comes across as the figurehead of a crazy conspiracy, 25 of whose alleged adherents were arrested last week after a nationwide German hunt involving 3,000 officers searched 150 properties, including some in Italy and Austria. What's particularly worrying is that his adherents included a current member of the elite German special forces, a former policeman and judge, and a former MP for the far-right Alternative for Deutschland party, whose insider knowledge of Parliament was intended to facilitate a smooth takeover. Chancellor Olaf Scholz, Angela Merkel's unimpressive but not particularly offensive replacement, was among those potentially headed for the chop. He wasn't the only one. There were other deaths that were bound to happen, according to intercepted phone calls. What's alarming is that all too many of the German officials talking to the international press prefer to do so on conditions of anonymity. It has been reported that further arrests are imminent, but at the same time there are indications that there was no serious threat to the German state. At least not immediately. Who knows what lies in store 10 years hence? Nazism in the 1930s was a response to the Versailles settlement and the vagaries of the Weimar Republic. But by the time Hitler came to power, fascism was well entrenched in Europe. A century later, there's the post-fascist Giorgia Meloni in Italy, Viktor Orban in Hungary, fairly far-right governments in the Czech Republic and Poland, and Putin in Russia. Not to mention extremist tendencies from France to Sweden.
What Europe might look like a decade hence if Putsch comes to shove in Germany or elsewhere is impossible to say. But right across the continent, there are signs of how the consequences of neoliberalism might play out. If history doesn't repeat itself, it might rhyme. And it won't be a pretty picture. Published in Dawn, December 14, 2022. Subscribe now. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. तकरीबन 100 साल पहले इंतहा पसंद इंतहाई दाएं बाजू के बाविरिया के एक ग्रुप ने मकामी तौर पर इक़्तिदार पर कब्जा करने की एक जुर्रतमंदाना कोशिश का आगाज किया, जिसके बाद उसे जर्मनी भर में फैलाने का ख्वाब था। नवंबर 1923 का पिलाट, जो तारीख में म्यूनिख बियर हालपच के नाम से जाना जाता है, जुज़वी तौर पर 1 साल पहले रोम पर बेनेटो मुसोलिनी के कामयाब मार्च से मुतासिर था। नवी फाशिस्ट इटली ने एक रूल मॉडल दी पेशकश की थी, लेकिन बाविरिया दे हुकाम ने बगावती कोशिश नाकाम बना दिया। गिरफ्तार होने वाले 9 अफराद में उनका रन लीडर भी शामिल था, जो एडवुल्फ हिटलर के नाम से पहली जंग अजीम का एक कारवर्ल था। इसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जो उसके खिलाफ इल्जामात के पेश नज़र सबसे ज्यादा नरम सजा थी, और उसने सिर्फ 8 माह गुजारे। इस दौरान उसने अपने सेक्रेटरी रूडोल्फ हेस को मैन कैंपफ को डिक्टेशन देना शुरू कर दी। इस वक्त उनके दीगर अहम साथियों में हिरमन गोरन और हीनर्क हमलर शामिल थे। 10 साल से भी कम अरसे के बाद वो सब इक़्तिदार में थे, जर्मनी में, न सिर्फ बाविरिया में। हिटलर जदीद यूरोपी तारीख में सबसे ज्यादा हंगामा खेज दर्जन सालों के लिए चांसलर रहा। यह तारीख एक याद दहानी के तौर पर काम करना चाहिए कि गुज़िश्ता हफ्ते थोरंगिया में नाकाम बनाए गए इंतहाई दाएं बाजू के मंसूबे को हल्के से मुस्तरद करना गलती क्यों हो सकती है। नाज़ीइज़्म के 90 साल बाद यूरोप का मुस्तकबिल किया है। इसके चेहरे पर यह तारीख की एक क्लासिक मिसाल के तौर पर सामने आता है, जो अपने आप को मजाक के तौर पर दोहराता है। ऐसा लगता है कि इसने अपनी ताकत रिखसबर्गर बरादरी के एक हिस्से से हासिल की है, जिसके मुतज़ाद पैरोकारों का ख्याल है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी बुनियादी तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत के बजाय मगरबी इत्तेहादियों के जरिया कायम करदा एक कारपोरेशन है। अगर इस बज़ाहिर मुज़हका खेज तजवीज़ के नीचे कोई सच्चाई है, तो ये यकीनी तौर पर सिर्फ जर्मनी पर लागू नहीं होता है। अमरीका इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज मिसाल होगी। इस दे अलावा मसोलिनी हुकूमत नो अक्सर यूरोप विच कारपोरेट स्टेटिज्म दी इब्तिदाई आर्किटाइप दे तौरती हवाला दत्ता जानिदा है। शायद आज इंतहाई दाएं बाजू और बाएं बाजू की बाकियात दोनों से, अगरचे ज़रूरी नहीं कि इसी बुनियाद पर, माशी न्यू लिबरलिज्म है, जिसने रेगन थेचर और क्लिंटन ब्लेयर अदवार में मगरिब के बेशतर हिस्से में मुआशरती जमहूरियत की मुख्तलिफ डिग्रियों की जगह ले ली। ये इन लोगों के लिए इंतहाई दाएं तरफ एक मसला है, जो अब भी मार्गरेट थेचर और रोनाल्ड रेगन को नजरियाती शबीहें के तौर पर देखते हैं। लेकिन इसके बाद म्यूपिया इस बात को तस्लीम करने से इनकार करने के लिए तौसी करता है कि बखेरने वाला और बिखरा हुआ ट्रंप का फलसफा किसी भी किस्म के हल के बजाय मसले का हिस्सा है। लेकिन बड़े पैमाने पर कारपोरेट सरमायादाराना निज़ाम की परेशानियों के दूसरे मुतबादलत के साथ यूटोपियाई फंतासियों के तौर पर मजाक उड़ाया जाता है। वसूल करने वालों में से बहुत से लोग आमिराना मुतबादलत पर अपना यकीन रखते हैं, जो बहुत ज्यादा वादा करते हैं लेकिन बहुत कम फराहम करने का इम्कान रखते हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जर्मनी एंग्लोफोन की दुनिया से बाहर कनवन साजिशी नजरियात का सबसे बड़ा सारिफ है, और ये कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके जर्मन आबाओ अजदाद को डम्पिफ्स के नाम से जाना जाता था, को एक मिसाली चीज के तौर पर देखा जाता है। हैरत की बात नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रूसी रियासत ने हिनर्क 13वीं के साथियों की मदद के लिए अपीलों का जवाब दिया। खुद सख्ता 71 साला वारिस, जिसे जर्मन मीडिया ने पट्च प्रिंस का नाम दिया है, एक पागल साजिश के सरगना के तौर पर सामने आता है, जिसके मुबैना पैरोकारों में से 25 को गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब जर्मनी में 3,000 अफसरान ने 150 अमलाक की तलाशी ली थी, जिनमें से कुछ इटली और ऑस्ट्रिया में भी शामिल थे। खास तौर पर तशवीश की बात यह है कि उनके पैरोकारों में अशराफिया जर्मन स्पेशल फोर्सेस के एक मौजूदा रुकन, एक साबिक पुलिस एहलकार और जज,
और इंतहाई दाएं बाजू की मुतबादिल फर्द डोचलैंड पार्टी के एक साबिक रुकन पार्लियामेंट शामिल थे, जिनकी पार्लियामेंट के अंदरूनी इल्म का मकसद हमवार कब्जे की सहूलत फराहम करना था। चांसलर ओलाफ शूल्स, अंजेला मुर्कुल के गैर मुतासिर कुन लेकिन खास तौर पर जारहाना मुतबादिल नहीं, मुमकिना तौर पर काटने की क़यादत करने वालों में शामिल थे। वो अकेला नहीं था। इंटरस्पेक्टेड फोन कॉल्स के मुताबिक दीगर अमवात भी थीं जो होने वाली थी। तशवीशनाक बात यह है कि बैन अल-अक़वामी प्रेस से बात करने वाले जर्मन हुक्काम में से बहुत से नाम जाहिर न करने की शर्त पर ऐसा करने को तरजीह देते हैं। ये इत्तला दी गई है कि मजीद गिरफ्तारियां करीब हैं, लेकिन इसके साथ ही इस बात के इशारे भी मौजूद हैं कि जर्मन रियासत को कोई संगीन खतरा नहीं है, कम अज कम फौरी तौर पर नहीं। कौन जानता है कि 10 साल बाद स्टोर में क्या है। 1930 दी दहाई विच नाजीइज्म वर्सेस दी आबादकारी थी विमार जमहूरिया दी बेकायदगियां दी जवाब सी। लेकिन जब तक हिटलर इक़्तिदार में आया, फाशिज्म यूरोप में अच्छी तरह से सरायत कर चुका था। एक सदी बाद इटली में पोस्ट फाशिस्ट जॉर्जिया मिलोनी, हंगरी में विक्टर ओरबान, चेक जमहूरिया और पोलैंड में इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमतें और रूस में प्यूटन हैं। फ्रांस से स्वीडन तक इंतहा पसंदाना रुझानात का जिक्र न करें। यूरोप एक दहाई की तरह नजर आ सकता है, लिहाजा अगर पोटिश जर्मनी आ कहीं और धक्का देने के लिए आता है तो ये कहना नामुमकिन है। लेकिन पूरे बर्रे आज़म में इस बात के इशारे मौजूद हैं कि न्यू लिबरलिज्म के नताइज किस तरह सामने आ सकते हैं। अगर तारीख अपने आप को नहीं दोहराती है तो ये नज़्म हो सकती है, और ये एक खूबसूरत तस्वीर नहीं होगी। डान अखबार में शाये शुदा 14 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.